अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज बन रहा है बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी हमिंग बर्ड केक। लास्ट वीक जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था केक, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि इसकी वीडियो रेसिपी हो या इसकी डिटेल रेसिपी हो। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। इसके बारे में डिटेल ब्लॉग पोस्ट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल सकती है www.bakefresh.net। और रेसिपी शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें। ये बहुत ही फ्लेवरफुल केक है। इसके अंदर सिनेमन का बहुत डोमिनेंट फ्लेवर है। फिर हम इसमें ओवरराइप बनानास यूज़ कर रहे हैं, पाइनएप्पल है, कोकोनट है, वॉलनट्स हैं। तो एक बहुत ही फ्लेवर पैक्ड केक है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। इसका टेक्सचर बिटवीन केक एंड मफ़िन आप कह सकते हैं। इसको हम 9 इंचेस पैन में बनाएंगे 2 लेयर्स में, और उसको सैंडविच करेंगे विद क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। बनाना जितने ओवरराइप होंगे उतना ही अच्छा है। केक को फ्लेवर भी देंगे और आसानी से मैश भी हो जाएंगे। पाइनएप्पल्स का जो टिन होता है उसके अंदर उसका सिरप भी होता है। मैंने पूरा सिरप डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि पाइनएप्पल्स को उसके सिरप के साथ ही हल्का सा क्रश कर लिया है, या फूड प्रोसेसर में हल्का सा ब्लेंड कर लें। वेजिटेबल ऑयल आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर, कैनोला, इवन कोकोनट ऑयल इज़ फाइन। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका बटर रूम टेम्परेचर पे हो और सॉफ्ट हो, वरना फिर लम्स रह जाते हैं, या वो अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो फिर वो होल्ड नहीं करेगी आइसिंग। तो मेक श्योर कि योर बटर इज़ एट द राइट टेम्परेचर।
इस केक को आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इन एन एयर टाइट बॉक्स अप टू 3 days। मेक श्योर कि बस फ्रिज की हवा कोई भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना आए केक के। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप अगर ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप लोगों को ज़रूर पता चले। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।